नाउ डू यू नो व्हाट इज एक्टर नेटवर्क थ्योरी? नाउ अगर आपने ये पहली बार फ्रेज सुना है, पहली बार अगर आपने ये वर्ड सुना है, देन लेट मी शो यू दिस क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर UGC नेट इंग्लिश. नेम द theory which assumes that culture is not separate from nature and that there is no hierarchy of actants such that the human is more privileged. और ये इसके ऑप्शंस हैं: एक्टर नेटवर्क थ्योरी, पोस्ट ह्यूमनिज्म, कल्चरल मटीरियलिज्म एंड अडेप्टेशन थ्योरी. और पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था अडेप्टेशन थ्योरी. इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्टर नेटवर्क थ्योरी. सो व्हाट इज एक्टर नेटवर्क थ्योरी? शॉर्ट में आपको समझना है तो जस्ट पहले ये डेफिनेशन देखो. एक्टर नेटवर्क थ्योरी व्यूज सोसाइटी एज अ डायनामिक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स. ठीक है, डायनामिक वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, among human and non-human entities called actants. It rejects fixed hierarchies, मतलब hierarchies fixed नहीं हो सकते, होते हैं लेकिन fixed नहीं हो सकते, and instead analyzes how power and structure emerge through interaction. ठीक है, through interaction of various actants. ANT or actor network theory encourages tracing networks to understand how dominance and order are actively constructed and maintained. ये तो हुआ brief में definition. आपको अभी भी अगर समझ नहीं आया, लेट मी गिव यू अ एग्जांपल. उससे पहले आप ये देखो, कोर आइडिया क्या है एक्टर नेटवर्क थ्योरी का? इट फंडामेंटली रिजेक्ट्स द आइडिया दैट ह्यूमंस आर नेचुरली सुपीरियर और दैट पावर फ्लोज फ्रॉम अ फिक्स्ड टॉप डाउन स्ट्रक्चर. इट डजंट रिजेक्ट हायरार्की, it just rejects any fixed hierarchy. It rejects the fact that human beings are superior. It says no. There is a principle of symmetry. ANT uses generalized symmetry. उससे पहले आपको एक इमेज दिखाता हूं मैं. Look at this image. स्पीड ब्रेकर है, गाड़ियां हैं, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो गई. So who are the actants here? ड्राइवर है, स्पीड ब्रेकर है. Remember, human and non-human both are a part of this. उसके बाद गाड़ी है, गाड़ी का सस्पेंशन होता है. Then there is the law which specifies that you have to go slow in a particular region. Parliament is there, laws are there, police is there to enforce those laws. All of these are actants. And of course the driver of the car. All of these are actants. So ANT uses generalized symmetry. This means humans, objects, technology and nature are all equally important. ठीक है, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, गाड़ी का सस्पेंशन हो, गाड़ी हो या ड्राइवर हो, all are equally important. No entity, human or non-human, gets analytical priority. We study them all the same way. उसके बाद agency is distributed. Agency का मतलब क्या है? Power to act. So agency isn't just in the person. So it's not in the only the driver. It's distributed across the whole network. So a stable social reality like a functioning office emerges from constant collaboration and negotiation between all elements. जितने भी actants हैं उन सबके बीच collaboration होगा, negotiation होगा, तब जाके for example office बन सकता है. उसके बाद power is an effect. Now power is not an origin, it's an effect. An entity is powerful, any entity, only when it has successfully enrolled and mobilized many other actants. मतलब no actant is supreme, but actants can come together and form a network, and that network can become supreme. That network can become strong. ANT tells researchers to trace how domination is achieved through these shifting associations, not assume it exists beforehand. So domination may happen, but it is a effect. It's not something given or something that pre-exists. So orderings are achieved. मतलब an order or ranking is achieved. So ANT doesn't deny that ordering or domination exists. We see them everywhere. So that is not rejected. But it rejects the idea that these are from a pre-given hierarchy. मतलब like society or humanity being intrinsically superior. ANT says no society or humanity or male or patriarchy that is not supreme. Instead, ANT says we must trace how these hierarchies are achieved. किस तरीके से ये हायरार्कीज बनते हैं, ANT is interested in that and maintained through complex shifting connections of all actants in the network. अगर इसको और भी डिटेल में समझना है, then join our live class batch and remember that doing previous year's questions is extremely important.